Do you see a sense of hyper-nationalism in the country today? Uh, How do you remember Andaz Apna Apna? Fondly? oh, well, it was a lovely time that we had. I have to say it was also a tough time. अभी पता नहीं इसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. बोल दूं? वो उस वक्त रवीना और करिश्मा का कुछ अनबन भी चल रहा था. It was a very scary film to make. क्यों? बहुत हम लोग डरे हुए थे because you know, तो I remember जावेद साहब called me. ये फिल्म क्यों बना रहे हैं? ये तो एक दिन नहीं चलेगी. तो आई सेड क्यों जावेद साहब, बहुत अच्छी कहानी है. He said नहीं इसमें आप देखिए, स्पोर्ट्स की फिल्म आज तक नहीं चली है, क्रिकेट की फिल्म आज तक नहीं चली है, आप अवधि में बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन आपकी बात समझेगा. और इस वक्त सब DKNY के कपड़े पहन रहे हैं, स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहे हैं और आप गांव में लगे हुए हैं, धोती वोती बंडी पहन रहे हैं. तो मतलब, एंड ही हैड नंबर ऑफ पॉइंट्स, यू नो, ही हैड मेनी पॉइंट्स. वन ऑफ हिज पॉइंट्स वाज इवन दैट, ही सेड आपने अमित जी की आवाज यूज कर ली है. इनफैक्ट मिस्टर बच्चन टोल्ड मी दैट व्हेन आई वेंट टू हिम. आई सेड सर आप ये नरेटर बन जाओ. ही सेड मैं बन जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आमिर, लेकिन मैं जिस फिल्म में मैंने नरेशन दिया है वो फिल्म कभी नहीं चलती. तो ये लाइन अशु और मैं एक दूसरे को हर रात को बोलते थे. अशु, ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की. Are you 60? Had the years been counted correctly? What are you doing with yourself? Well, actually, I don't feel 60, you know. The fact is that I think a lot of you may identify with what I'm saying. In my head, I'm still 18 or 20 or something, you know. And it's only when I look in the mirror, I realize, nahi, abhi 18 ka nahi hu main. But otherwise, in my head, I'm still... How have you been? When you look back at those 60 years, what does Amir Khan see? Like, we know what we are seeing, right? What does Amir Khan see? Oh. Well, it's been a very exciting journey, I have to say. And today, when I look back, I had no idea I would, you know, be on this journey in this manner. When I started out, I was just very nervous about getting things right. And I have to say, I'm still nervous about getting things right. So not much has changed in that. But I've had a great opportunity to work with some amazing writers. So I got some great scripts coming my way. Worked with some great directors who've taught me so much, and also, you know, actors and colleagues, different technicians I've worked with, DOPs, sound people. So this whole journey has been quite a enriching one, I have to say, and I'm really grateful for this journey here. But do you think, Aj, if you want to make a Delhi Belly today, it would be accepted as well? People say that people have become more sensitive towards comedy. Like they'll pick up a word or a song and probably, you know, get offended. This right to offend has gone. I don't think... See, Delhi Belly has got a lot of, you know, abusive language in it. But that we had warned the audiences that इसमें abusive language है. It was an adult-rated film. We had applied for adult, and plus in our marketing, we had tried to sensitize people about the fact that there is abusive language. So if you're uncomfortable with that, then you should not watch the film. So we took care of that. I mean, I'm someone who likes to do that because I have a very strong family audience, and I don't want that audience to get disappointed. So my communication is always very clear. So when I'm doing a film which has got adult content, I make sure I go out on a leg to tell my audience that this is for adults. And that's what we did for Delhi Belly. So I don't think anyone would have got offended. How do you remember Andaz Apna Apna? Fondly? Oh. Well, it was a lovely time that we had. I have to say it was also a tough time because I was the only actor who used to come on time. No one else came on time. You can see the others on the screen. So you कोई टाइम पे नहीं आता था. और अभी पता नहीं इसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. बोल दूं? वो उस वक्त रवीना और करिश्मा का कुछ अनबन भी चल रहा था. तो वो रवीना आती थी तो करिश्मा चले जाती थी, और करिश्मा आती थी तो रवीना चले जाती थी. तो मैं सोचता था यार फिल्म कंप्लीट कैसे होगी यार, एक साथ हम लोग शूट ही नहीं कर पा रहे हैं. 4 लोग 4 डायरेक्शन में. तो वो बड़े मुश्किल से वो फिल्म अल्टीमेटली बनी है. बट इट वाज, आई मीन, आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट फिल्म. You did. And I used to find that sense of humor really, you know, wacky and mad. And I think the amazing part is that when the film released, though it had Salman and me at our peak at that time, we had just come out and were both very popular, the film didn't do well at all in the cinemas. बिल्कुल नहीं चली. मतलब पानी नहीं मांगा. ये जो मुहावरा है ना, पानी नहीं मांगा. आदमी जब मरता है तो बोलता है पानी पानी. उसने पानी भी नहीं मांगा. तो literally it didn't run for more than a week. And we were
I mean, I was flummoxed because I thought it was a great film. But it was a disaster. And then suddenly over time I realized in home entertainment, it's हर आदमी देख रहा है and it became the number one. I believe it's the number one home entertainment film, perhaps. Can we have the Lagan poster now? Because I think this, in the celebration of your entire career, this film will always be so strong. It was like a huge round of applause. I mean, patriotism, but with such a flavor, Amir. Like, it was pure genius, this film. It was a very scary film to make. क्यों? बहुत हम लोग डरे हुए थे because you know it was a film. For example, Javed Saab had heard the script. He was a lyric writer of the film. He had approached him. So I remember Javed Saab called me and he said, "आप क्या हिमाकत कर रहे हो?" I said, "क्यों Javed Saab, क्या हुआ? आप फौरन आइए." तो Ashutosh had narrated the script to him and he called me up and said, "Come and see me now." तो मैं गया मिलने Javed Saab से. तो Javed Saab ने कहा, "ये फिल्म क्यों बना रहे हैं? ये तो एक दिन नहीं चलेगी." तो आई सेड, "क्यों जावेद साहब, बहुत अच्छी कहानी है." इसे नहीं, इसमें आप देखिए, स्पोर्ट्स की फिल्म आज तक नहीं चली है, क्रिकेट की फिल्म आज तक नहीं चली है, आप अवधि में बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन आपकी बात समझेगा, और इस वक्त सब DKNY के कपड़े पहन रहे हैं, स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहे हैं और आप गांव में लगे हुए हैं, धोती होती बंडी पहन रहे हैं. तो मतलब, एंड ही हैड नंबर ऑफ पॉइंट्स, ही हैड मेनी पॉइंट्स. वन ऑफ हिज पॉइंट्स वाज इवन दैट, ही सेड, आपने अमित जी की आवाज यूज कर ली है अपना as the voiceover. It begins with Amit ji's voice, सन 1893. हाँ, तो apparently whichever film Mr. Bachchan has given a voiceover for has flopped. I'm not joking. In fact, Mr. Bachchan told me that when I went to him, I said, "Sir, आप ये narrator बन जाओ." He said, "मैं बन जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आमिर, लेकिन मैं जिस फिल्म में मैंने narration दिया है वो फिल्म कभी नहीं चलती." तो ये आप बात नोट कर लेना, बाकी आई एम हैप्पी टू डू इट. सो ही सर, आपने ये पंगा भी ले लिया, आपने अमित जी से नरेशन भी करवा लिया है, तो अब तो कंफर्म हो गया आपकी फिल्म नहीं चलने वाली. लेट मी जस्ट टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट लगान. आई थिंक आई रिमेंबर इट वाज अ टफ, वेरी टफ फिल्म टू मेक बिकॉज क्रिकेट इज अ वेरी टफ स्पोर्ट टू शूट. क्या एक्टर आपकी बात सुन लेते हैं, बॉल आपकी बात नहीं सुनता है. तो बड़ा मुश्किल हुआ हमको क्रिकेट शूट करना, बट किसी तरह हमने वो फिल्म बना ली. एंड आई रिमेंबर उस फिल्म में एक सीन है जब मैं टेम्पल में खड़ा हूं, शर्त वर्त हो गई है, सेकेंड हाफ में सीन आता है, एंड सडनली आई फील दैट आई डोंट थिंक वी कैन बीट द ब्रिटिश. थोड़ा एक डाउट का मोमेंट आता है भुवन को. तो वो खड़ा है भगवान के सामने, ही इज लुकिंग एट द मूर्ति एंड ही इज वेरी स्ट्रेस्ड, एंड माई कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड शी सेज, I don't exactly remember the line, but she says, what is troubling you? And my line is, माई ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की. तो ये लाइन अशु और मैं एक दूसरे को हर रात को बोलते थे, अशु ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की. तो पूरे 6 महीने हम लोग ये फ्रेम ऑफ माइंड में थे, अशु ये बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की. अच्छा, हाईलाइट है कि जो फर्स्ट कट था वो 7.5 घंटे का था. 4.5 घंटे वॉज टिल द क्रिकेट स्टार्ट्स. 7.5 घंटे शूट कर लिया था. नहीं, हमने देखा है 7.5 घंटे की फिल्म. 4.5 hours was till the cricket starts. The breakfast 3 days of cricket, 1, 2, 3, each was 1 hour long. So 4.5 plus 1 hour each, 7.5 hours was the first cut. So when the first cut got over, all of us were exhausted. मतलब हम लोग थक गए थे, हम खुद थक गए थे, ऑडियंस क्या नहीं थकेगी. तो मैंने आशु को उस वक्त भी बोला था, आशु इस बीड़ा उठा के हमने कौनो गलती तो नहीं की. तो खैर फिर एडिटिंग में घुसे, एंड the whole journey of Lagan was a very exciting one, very exciting. Do you see a sense of hyper nationalism in the country today? I don't know. I kind of live in my own world here. I'm in my world of films and cinema. You should know better. Why don't you tell us? I want to dissect this man in Three Idiots in the center. How old were you then when you did this film? I was 44, I think. And he was doing a college-going... Yeah. I was so against it. Raju was insisting to me. जब राजू ने कहानी सुनाई, मैंने बोला बहुत अच्छी कहानी है यार राजू, बट तू मुझे क्यों ले रहा है, मैं तो 40 का हो गया हूँ. I was over 40 that time. Take 18-year-olds, and your script is very good. You don't need me. You just have 3 young actors. So he kept insisting, नहीं, I want you. And I was like, राजू अजीब लगेगा यार, मैं बुक लेके कॉलेज आ रहा हूँ, लोग हंसेंगे.
We'll become a laughing stock, yeah, of the nation. Actually, very, very challenging. Arey, 44K. I was so scared, Anjana, I cannot tell you. I told him on the one day before the shooting. एक दिन मतलब अगले दिन शूटिंग थी. मैं बोला राजू अभी भी सोच ले कल शूटिंग शुरू हो रही है. हम लोग हिमाकत करने जा रहे हैं. I'm 40 plus and I'm playing an 18-year-old. मतलब and ऐसा भी नहीं है कि people know my age. So कोई छुपी नहीं है बात. They know how many years I've been acting. But how did you get into this character? Because you look pretty young in this. I'm like. Well, I had to. So actually the reason I finally said yes to him is because I felt कि यार राजू मुझ में कुछ देख रहा है जो मैं अपने आप में नहीं देख पा रहा हूँ. And I really like Raju as a director. Wow, yeah. I'd never worked with him. So I was thinking, and I don't trust anyone else's judgment. He'd done Munna Bhai Lage Raho. He'd done Munna Bhai, he'd done Lage Raho, yeah. And whenever I take a decision of which film I'm doing, it's always something I want to do. Script बहुत अच्छी थी मुझे करनी थी, but I couldn't do it for age. So I was thinking, राजू क्यों insist कर रहा है? तो राजू कुछ देख रहा है मुझ में जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ. And if I trust him, then for once let me trust someone else. So I said, चलो राजू को trust करके देखते हैं क्या होता है. So I trusted him. And actually Raju had only one reason he kept giving me. He said, यार मेरी पूरी theme जो है ना, that whole theme of the film is you have lived that theme. तो उसकी थीम थी don't chase success, chase excellence. And if you chase excellence, success will come after you. So he said, Amir, your career choices are unbelievable. You have never chased success. तूने पता नहीं कौन सी फिल्में उठाई हैं जो कभी सक्सेसफुल कोई एंगल से नहीं हो सकती थी. तो तूने क्या सोच के वो किया? सक्सेस सोच के तो नहीं किया तारे ज़मीं पर. या लगान. You were not thinking of success when you were doing that. So you have lived that philosophy. When you say that philosophy, people will believe it. So I need you to say that philosophy. And he said, तू काफी young दिख रहा है. I said, बकवास मत कर. So anyway, then finally I had to really work on the body language and the head space. You were like this.